ओके ऑडियो समस्त क्लियर आसपे ओके ठीक अच्छे एगेन नमस्कार समस्त प्रणाम जय जगन्नाथ प्रणाम प्रणाम जय हिंद कुनाल प्रणाम पियर क्रिस प्रणाम प्रणाम पियर ओके प्रणाम प्रणाम शिवानी प्रणाम तरुण जी प्रणाम समस्त को हाँ काली समस्ते जो 10टा क्वेश्चन डिस्कस करथिला समस्ते क्लियर हो जाइथिला से टॉपिक ना उथरे रिवीजन करिके एकातरे 50टा कंप्लीट करबा टिके कंफर्म कर दियो हमें हमर नॉर्मल एज यूजुअल टॉपिक पढ़े सो प्रणाम 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 आर्या रिवीजन करता हो ठीक अछि तेना तुम मान को पुणी से जो थियोरी पढ़ी काली तुम पूरा भलसे बुझा पड़ो हाँ ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं बहुत बढ़िया से आम कल बुझी एग्जाम्पल थिला आमर कौन किए कहीपर एग्जाम्पल कौन थी आमर कल मंडा पिठा और हाँ सर्ट रिवीजन कर मोमो ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ फास्ट आम देले प्रथम क्वेश्चन प्रणाम प्रणाम ओके good morning okay which of the following is the primary focus of positive economics analysis positive economic analysis रो कोटा कौन गोटे फोकस मुझे कही बारंबार पॉजिटिव इकोनॉमिक कहले हम कौन कहबा कौन घटुची व्हाट इज हैपनिंग विषय अध्ययन करवा फैक्ट विषय जानिबा तथ्य जोटक आम कहूचे है ना नहीं इफेक्ट ऊपर जानिबा वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव जोटक आम कहूचे है ना नहीं ओके हाँ गोटे एग्जांपल जीवा है नहीं मुझे तुम मन कही मन अच्छी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक रो डिफरेंस कौन अच्छी नॉर्मेटिव पेपर ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ प्रणाम प्रणाम प्रियार सॉरी प्रकाश ओके हाँ इथे कौन था व्हाट इज सॉरी हाँ नहीं जन आउ कौन था फैक्ट बेस था है ना नहीं तुम कही ऑब्जेक्टिव था टेस्टेबल था है ना नहीं आ कौन ऑब्जेक्टिव आ कौन था टेस्टेबल है ना नहीं आ कौन एपटे तार ऑपोजिट व्हाट शुड बी एटी कौन कहीं बा एटा कौन हेबा दरकार हाथ ही चलुनि रे हाँ हाँ ठीक अच्छे आउ गोटे है वैल्यू बेस्ड भी आ गोटे कौन सब्जेक्टिव आ गोटे है
नॉन डायरेक्टली टेस्टेबल एनडीटी ठीक अच्छे था अधिक एपटे डिस्कस करवानी काली आम सारी एगुड़ा सब ठीक अच्छे ये कौन अच्छी ऑब्जेक्टिव अच्छी positive economic analysis studies different mechanism in an economy functions objectively ठीक है subjective हेले normative हबो who is considered the founding father of modern economics whose work established the principles of market economy एटा भी कहिछि काली ना नहीं गुड मॉर्निंग सांस दे दियो आओ ये मैक्रो इकोनॉमिक रो है ना नहीं फाउंडर हाँ नहीं मैक्रो इकोनॉमिक बस मैक्रो था है कार्ल मार्क्स रे मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक रो मार्क्सवाद जोटा जानिछ समाज रे उच्च नीच न रहबा दरकार जोटा मार्क्सिस्ट इको ठीक अछि एला मैक्रो इको अंकर हला कोन नॉर्मल मॉडर्न जोटा होचे इकोनॉमिक रो सी हेले फादर अल्फ्रेड मार्शल हेले की कहि परिबो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक काली कहिजी ठीक अच्छे क्लियर डिमांड जोटा कम कहे परफेक्ट Adam Smith is the founding father of modern economics. He celebrated 1776 book an inquiry into the nature and cause of the wealth of nations. Se boy na kon an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations laid the foundation for capitalism and the free market system jotar the concept of the invisible hand kali kahichi एटा भी कही कल बहुत बढ़िया से एटा बुझीच तुम मैंने जदि कह गोटे भूल हुए मैं आरंभ करी गाड़ी करी आ मत मौका मिल जाओ टचपैड लैपटॉप टचपैड मूवमेंट करूँ ठीक से तो प्रॉब्लम हो हाँ समस्त आंसर देदेल बहुत बढ़िया कथा काली बुझीच भल से हाँ नहीं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स परसुइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट है ना नहीं गोटे एग्जांपल धरि नियो हाँ कौन एग्जांपल दबा एग्जांपल कौन दबा कहो हाँ काली बढ़िया मोमो एग्जांपल ठीक अच्छे गोटे मोमो वाला मार्केट रे भल प्राइस रे ता निज प्रॉफिट ता सेल्फ इंटरेस्ट पाई ठीक अच्छे तार सेल्फ इंटरेस्ट ता प्रॉफिट केमती गेन करिवो से बिजनेस रे से कौन कला हाई क्वांटिटी हो से कौन कला बिकिला तो भलो क्वालिटी जिनस बिकिला सोसाइटी को फायदा है इनडायरेक्टली से सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कला मोमोर स्पॉन्सरशिप आ किसी पर मोमोर धज्जिया उड़ी अवस्था नहीं मु मोमो को पसंद करे ना मोमो को देखले मते विरक्ति लगे मंडा पिठा हो बुझी पाला सेल्फ इंटरेस्ट पाई बिकिला ठीक अछि तो फायदा कहार हला माने ई जो बिकिला से भलो क्वालिटी जिंस कंज्यूमर जे कि माने जोटा कहछे कस्टमर कहि पारे कंज्यूमर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव करले बा खाद्य रिसीव करले सोसाइटी को बेनिफिट है विदाउट शॉपकीपर रो माने डायरेक्ट इंटरेक्शन रो ठीक अछि बिना डायरेक्ट इंटरेक्शन माने बिना डायरेक्ट हेल्प रे से कोन कला डबल प्रॉफिट कला हां ना डबल प्रॉफिट न माने प्रॉफिट कला इनडायरेक्टली से कोन कला प्रॉफिट माने फायदा देला कहा को सोसाइटी को काहे ना भलो क्वालिटी जिंस बिकिला तार निजरो प्रॉफिट हला सेल्फ इंटरेस्ट हां नहीं जदि यार शॉर्टकट कहइबो शॉर्टकट कहले कौन बुझु हम इनविजिबल हैंड कहले और आईएच इनविजिबल हैंड
ठीक अच्छे सर्टकट कहली सेल्फ इंटरेस्ट थी एसआई प्लस आउ कौन फ्री मार्केट एफएम देन प्लस कंपटीशन हाँ ना नहीं तापर कौन है एतिकी हाँ एतिकी ही थी ठीक अच्छे ता देखा देखिए अना समस्या आसो हाँ ना नहीं एडम स्मिथ suggested that if buyers and sellers in a market make decision based purely on their self interest, the market forces price mechanism act as an invisible hand to bring equilibrium and maximize general well-being without state intervention. कहीं ना जेते बड़े गोटे दुकानी भल जिनस देला सेमती आउ कुछ दुकानी बाहर से माने भी सेमती कम प्राइस रे जिनस बिकिबे हाँ नहीं भल क्वालिटी जिनस देबे सेमती कौन हम कंपटीशन रहिबो मार्केट जोटा कि गुड वेलबीइंग रे चलिबो व्हिच इकोनॉमिक सिस्टम इज एक्सप्लिसिटली बेस्ड ऑन लाजिस फेयर खाली बारंबार बुझेछि मीनिंग जीरो स्टेट इंटरवेंशन इन कोर मार्केट फोर्सेस बारंबार बुझेछि जहार बोलबो गाड़ी सुनिबो रेडी था कही बारंबार कही कहीं कैपिटलिस्ट ही हम हाँ ना नहीं कहीं कैपिटलिस्ट हम गोटे सर्ट एग्जांपल जस्ट पढ़ाई कैपिटलिस्ट सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सी मिक्स्ड इकोनॉमी एमई ठीक अच्छे तो सर्टकट नवा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गोटे अच्छी सीपी कम्युनिस्ट इकोनॉमी गोटे अच्छी बोधे काली पीआर कही बोधे तुम मन पकई मत मोर टिके मन था धन्यवाद तुमको जन आउे ए कौन थाए गवर्नमेंट इनकम मिनिमम माने इंटरवेंशन सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन माने गवर्नमेंट से इंटरफेयर करे मिनिमम माने प्राइस एते हबो सेते हबो सेम एते क्वांटिटी बिकिया दरकार सेते क्वांटिटी बिकिया दरकार ये सब जिनस इंटरफेयर करवानी एटा मॉडरेट ठीक अच्छे एमई रे मॉडरेट था सीपी बा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो वेरी हाई थाए हाँ ना नहीं कहना माने कौन सेंट्रली प्लान्ड गवर्नमेंट तरह प्लान ही अच्छे मिक्स्ड रे कौन थाए मिक्स्ड रे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ निज निज प्रॉफिट देखते हाँ ना नहीं कम्युनिस्ट इकोनॉमी ये कौन था वेरी हाई क्लियर हाँ मौसा आसगले प्रणाम प्रणाम मौसा हाँ बुझीगल समस्ते से कौन कही मीनिंग जीरो स्टेट इंटरवेंशन इन कोर मार्केट प्रोसेस है ना नहीं ओके क्लियर एटा कैपिटलिस्टिक देखियो पहले ठीक अच्छे आम कैपिटलिस्टिक कही कैपिटलिस्टिक आ कम्युनिस्ट दीटा डिफरेन्स स्टडी कहीं सी लिखी दीटा डिफरेन्स देखिए ठीक अच्छे पहले कि मिक्स करनी आफ्टर व्हिच मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट डिड मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज एज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ब्लूटूथ सब जो माने मु लगो कान चार्ज सरी हो कि ब्लूटूथ ये मु भी जान हाँ एटा भी काली कही ना कहनी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 जोटी आम कहूचे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता यूएसए रे आ कौन होता फेलिंग प्रोडक्शन बा फॉलिंग प्रोडक्शन जोटा कहते प्रोडक्शन रे फेलियर होता बैंक फेलियर्स होता बा जोटा आम कहचे शेयर मार्केट क्राश होता सीवियर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आसला क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी जोटा कि ये तीनटा जिनस कौन सल्यूशन दे पारि नथिला आज ए रिजल्ट कौन है जॉन मेनार्ड केनेस डेवलप करते मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो कौन फोकस करता
जे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ को आज गोटे ठीक अच्छे हाँ नहीं आ बाकी अदर ऑप्शन कहले कौन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जोटा कि कौन करता आग को बढ़ाई ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड कैपिटलिज्म को आ सांगे तार माने मैक्रो इकोनॉमिक क्रिएशन ने तार कौन संपर्क ना बोल्शेविक रिवोल्यूशन 1917 की जो मन पड़ुछि काली कहिथिले गोटे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इन रशिया जोटा को हम कहूचे जोटा इन्फ्लुएंस करथिला सोशलिस्ट हां नहीं सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस हितरा ता द्वारा आ लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान जोटा कहूचे 1951 जोटा को हम कहूचे कौन कहूचे हमें ताकू परवर्ती समय सेटा कौन हला मैक्रो इकोनॉमिक रे एमर्ज हला हां नहीं हां नहीं बुझी पाइलो classic self-correcting market. Okay. John Maynard Keynes challenged the classical economic tradition by publishing which celebrated book in 1936. काली कहितली से कौन करता गोटे फेमस बुक थिला द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी से कौन करथिले सेईटा ही तांकू मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक रो फाउंडर बोली तांकू पहुंचेला है नहीं नीति आयोग भी हाँ 2015 रिप्लेस होता बहुत बढ़िया ओके क्लियर समझते इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज द सेंट्रल अथॉरिटी ओन ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी विथ नो रूम फॉर प्राइवेट ओनरशिप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कम्युनिस्ट मिक्स्ड लार्ज फेयर बुझिबो ताबरा आंसर दो ठीक अछि भूल वाल की आंसर दबानी माड़ गोटे तले पड़ो सब माड़ तुम पिठे पड़ो ना कम्युनिस्ट हाँ नहीं जदि क्यों प्रकार अर्थनैतिक व्यवस्था केंद्रीय कर्तृपक्ष जमी और संपत्ति सहित उत्पादन समस्त प्रधान कौन साधन सॉरी साधन उपरे संपूर्ण मालिकाना सब्यस्त करते संपूर्ण कही माने वेरी हाई कोड थेला कम्युनिस्ट है ना परफेक्ट which of the following is considered a core defining characteristics of a mixed economy मौसा पूरा घाइला ही गई नहीं प्रणाम प्रणाम शुभश्री हाँ समस्त आंसर देदेल हाँ बुझे पढ़ेगा तो मैंने कहीदेल कोएक्जिस्टेंस ऑफ ए रोबस्ट पब्लिक सेक्टर एंड एन एक्टिव प्राइवेट सेक्टर कहले कौन मिक्स्ड इकोनॉमी आम बुझुचे इन इकोनॉमिक्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड टू व्हाट perfect production possibility set any point lying strictly inside or below the production possibility frontier PPF indicates that dash एडी तमर खाली मंडा पिटा एग्जांपल दिया था है ना नहीं पहले मौसा हाइलाइट गले मौसा पूरा हाइलाइट रसन मंडा पिटा एग्जांपल हबो एग्जांपल बुझिबा उथरे बुझिबा जति को मु बुझेदी मु बुझिया पे रेडी अछि ताने बुझिया दरकार हाउ मंडा पिठा एग्जांपल तुमरो मोमो है नहीं पीपीएफ का हमें तीन भाग विभक्त करिचे है नहीं
गोटे है ऑन पीपीएफ है ना हाँ इनसाइड पीपीएफ आउट अच्छे है ना काली कही बारंबार हाँ तापर आउट है आउटसाइड है मोमोस वर्सेस मंडा पिठा सॉरी यू सॉरी सॉरी चलो चलो तुम मैंने चलो हाँ मुझे बुझे तुम जो बुझीपर जो वे से ये बुझे दूसरी ठीक अच्छे हाँ ऑन पीपीएफ कहले कौन आम पाखे धरिन भुवनेश्वर कूटा धरिन फायर स्टेशन ने डिमांड हिसाब से धरिन जिते आम पाखे धरिन एग्जांपल गोटे कहूँ धरिन आम पाखे अच्छी सुजी हो मैदा हो जोटाक सब से मंडा पिठार लगे है ना से जहाँ भी मोमो हो ठीक अच्छे आम पाखे 100टा पेटी अच्छी मैंने 100टा अमाउंट यूनिट अच्छी मंडा पिठा मोमोस बनवाई किसी कपड़ा बनवाई रजपाई 50टा यूनिट अच्छी है ना आमे कौन कले सबू रिसोर्सेस रो 100% यूज कले प्रॉपर्ली यूटिलाइज कले मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन बाहर कले सेटा हला ऑन पीपीएफ जेति की पोस्ट माने 100% रिसोर्सेस यूज करिके आमे प्रोडक्शन देल ठीक अछि एटा हला ऑन पीपीएफ माने जे ताको आमे कोन कहि परिबा एफिशिएंट यूज जोटा आमे कहउछे माने नहीं कहो एफिशिएंट तापर इनसाइड इनसाइड कहले कौन इनएफिशिएंट यूज धरिन आमर आवश्यकता अच्छी आवश्यकता उछाड़ आम पाखे अच्छी 60टा एटी 100टा जी आम तार सब यूज कले आम पाखे एवं अच्छी 60टा अच्छी सुजी हो कि मैदा हो जहाँ भी से मंडा पिठा यूज है 60टा यूनिट अच्छी कपड़ा यूनिट अच्छी 30टा ठीक अच्छे आम पाखे कम वर्कर अच्छा मेसिन्स कम अच्छी किंबा जगह कम अच्छे रिसोर्स आर माने जोटा आम कहीपर अंडर यूटिलाइजेशन अच्छी जो एमती नॉर्मली कहीपर आम फैक्ट्री 100 जन वर्कर अच्छा किंतु 60 जन कामिका लोक ठीक अच्छे 60 जन काम कर माने रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइजेशन ठीक अच्छे माने आइदर कौन कहीपर आम पाखे माने सफिशिएंट लोक अच्छा किंतु आम इनएफिशिएंट यूज कर माने जिनस अच्छे आम एफिशिएंटली यूज कर पारुनु हाँ नहीं हाँ ना नहीं बुझिपार जोटा आम कहे अनएम्प्लॉयमेंट कहीपर वेस्ट भी कहीपर इनसाइड रे हाँ ना नहीं क्लियर समस्ते माने एटी गोटे कहीपर माने एटी माने कहीपर एटी सफिशिएंट जिनस ही नहीं इनएफिशिएंट यूज है ना नहीं बुझिपार क्लियर समस्ते हाँ ना नहीं पिले समस्ते क्लियर तो हो तापर नेक्स्ट जीवा एटा हला इनएफिशिएंट यूज ठीक अच्छे इनएफिशिएंट देन आसला आउटसाइड आउटसाइड कौन हुए ये मंडा पिठा दरकार धन्य आम पाखे अच्छे 120टा माने सुजी मैदा जहाँ भी कहीपर 120टा यूनिट अच्छी कपड़ा रजपाई 80टा यूनिट अच्छी ठीक अच्छे आम पाखे करेन्टली जी रिसोर्सेस अच्छी जी टेक्नोलोजी हिसाब से आम मार्केट रो नीड हिसाब से कंट्री रो नीड हिसाब से आम से प्रोड्यूस करिपरिबा नाही आम पाखे से टेक्नोलोजी नाही हाँ नहीं जोटा आम कहूचे से पॉइंट को पहुँचवा माने कंट्री रो आवश्यकता से रिसोर्सेस आम पाखु बहुत अधिक रिसोर्सेस दरकार अधिक बेटर टेक्नोलोजी दरकार इकोनॉमिकल ग्रोथ हाँ नहीं एटा कौन कहे आम अनअटेनेबल आम पहुँची पारिबा नहीं से जगह हाँ ना
क्लियर हाउ मंडा पिठार बेइज्जत सही पाइलेन तो मान नहीं हाउ समस्त आंसर दे दिवार से कौन कही इनसाइड इनसाइड कथा कहूँ आंसर आंसर पे मैंने आंसर वेरी गुड रिसोर्सेस आर अंडर एम्प्लॉयड और यूटिलाइज इन ए वेस्टफुल फैशन है ना नहीं जो जस्ट तुम टिके पूर्व कहूली एग्जांपल जे कौन अनएम्प्लॉयमेंट आउ वेस्ट कहि परिबो इनसाइड पीपीएफ ऑन पीपीएफ केते फुल एंड एफिशिएंट यूज आउटसाइड रो कौन नॉट पॉसिबल ना वर्तमान पर्यंत हम पाखे सेतिक जिंस नाही रिसोर्सेस और सेतिक बेटर टेक्नोलॉजी नाही what is defined as the cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be forgone पूरा मुंडा ऊपर जाउची क्वेश्चन नहीं अच्छा तो कही सारे नहीं हाँ बुझा आगे ठीक अच्छे आगे कौटा कौन बुझा ठीक अच्छे शंख कष्ट कहले कौन बुझा सब गोटा बुझा बुड़ी जाइथिबा मूल्य जोटा आम कहे धन्य जो कस्ट माने ऑलरेडी माने हो सारी इनक्योर हो जाइए जोटा आम रिकवर आउ करि परिबानी ठीक अच्छे माने जो कस्ट ऑलरेडी हो जाइए ठीक अच्छे देन मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कहले आम कौन बुझुचे ठीक अच्छे मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कहले एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जोटा कहूचे माने आउ गोटे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने को हेले आम कौन एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट जोटा आम कहि परिबा फैक्ट्री कॉस्ट कहले कौन कहूचे आम धन्य माने गोटे पेमेंट आवश्यक गोटे लैंड हो लेबर हो कैपिटल हो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्शन सब जिनस देन लैंड हो लेबर हो कैपिटल हो कि एंटरप्रेन्योरशिप जो पेमेंट्स आवश्यक से फैक्टर कॉस्ट कहते ये सब फैक्टर रो कॉस्ट ठीक अच्छे देन आंसर रहा आम पाखे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने कौन भी बुझा ठीक अच्छे जो कहले सैक्रिफाइस थाए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव थी तादे आ कौन जमी धन्य तुम मैंने पढ़ुच ठीक अच्छे गोटे एमती एग्जाम पढ़ुच माने तुम मूवी वूवी छाड़ी दी कि सब तुम मैंने पूरा एग्जाम पूरा तुम सैक्रिफाइस कर दे मूवी को सैक्रिफाइस गोटे बढ़िया मूवी ना कौन ओडिया गोटे कौन चली कौन से मुझे जानी मो मन पड़नी से अनुभव गोटे कौन चली समस्ते फटो फटो कर छाड़ुं सब खाली स्टाटस दौरान धन्य तुम मैंने मूवी हॉल को मूवी न देखा जाकि मूवी जीवा को सैक्रिफाइस करके पाठ पढ़ुच गोटे एग्जाम ठीक अच्छे आउ कौन गहम प्रोड्यूस करने अधिक आम कौन आमर राइस अधिक प्रोड्यूस करुँ कहीं आम राइस आवश्यकता है ना नहीं एग्जाम्पल आउ गोटे कौन दबा धरनीय आम कहते पीपीएफ कथा टी पूर्व कहते जो गोटे पीपीएफ रे धन्य अधिक रु अधिक गुड्स प्रोड्यूस करने को हेले कौन करिया पड़ो सम क्वांटिटी माने अनदर गुड्स सब दबा पड़ो सैक्रिफाइस करने को पड़ो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को है ना जमी एग्जांपल आउ गोटे दबा धन्य गोटे कृषकर ठीक अच्छे धन्य गोटे दुकानी मोमो दुकान अच्छे ठीक अच्छे ना गोटे दुकान धन्य जलखिया दुकान अच्छे ठीक अच्छे सी बरा चप छाणिया अपेक्षा सी कौन कला मोमो बनैला ठीक अच्छे 50टा बरा छाणिया अपेक्षा 100टा मोमो बनैला कहीं फायदा देखिला बुझिपाल हाँ छक्की सुन क्लियर समझते because resources are scarce choosing more of one good necessities okay
into which economic sector would you classify activities like logging, poultry, aquaculture, and iron ore extraction? Aquaculture, huh? Mm-hmm. ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖୁଛି ତମ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। परफेक्ट प्राइमरी सेक्टर जहाँ हौ समस्ते बी को जाइन ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ବी ପାଟର୍ନ ପକେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫସେଇଦେବି ତମମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ନାଇଁ। ହଉ एग्रीकल्चर फरेस्ट्री पॉल्यूटरी फार्मिंग जोटा कହୁଛେ आक्वाकल्चर जोटा आमे कହୁଛେ आक्वाकल्चर कहले कोन बुझछ की कहबार आक्वाकल्चर माछ फार्मिंग जोटा आमे कहुଛେ माछ चाष जोटा कहुଛे चिंगुड़ी चाष फास ए सब माइनिंग कहले आयरन ओर जोटा आमे सब बाहर करबा सेटा कहि परिबो फोन कर जोटे एयरटेल कंपनी का गोटे से कौन कहि माने गाली दबा इच्छा हो जे मानू किछि नाही खालरे कॉल करी मुंड खराब हो छाड़। हौ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जोटा कमे होचे लॉजिंग जोटा कमे कहउचे पॉल्यूटरी फार्मिंग एक्वाकल्चर कहले फिश फार्मिंग कहउचे हमें माइनिंग कहले आयरन और एक्सट्रैक्शन कहउचे फिशिंग ये सब जाउचे कहा अंडर रे प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स जोटा को हमें कहते एक्टिविटीज इन्वॉल्व द डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर जोटा को हमें कहते है ना नहीं। सेकेंडरी सेक्टर कहले कोटा हमें कहउचे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग हमें कहउचे है ना नहीं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कहि परिबो। आ टेरिटरी सेक्टर कहले कोन बुझुचे हमें जोड़ा सर्विस प्रोवाइड करे बैंकिंग हो ट्रांसपोर्ट हो आ कोन एजुकेशन टा भी टेरिटरी जाए मन रखिथिबो ठीक अछि हेल्थ केयर भी टेरिटरी जाउछ सर्विसेज जोटा हम कहउछ ठीक अछि टेरिटरी सर्विस कहले एजुकेशन भी जाउछ ताउंट आ ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर कहले कोन बुझुचे हमें जोटा हम कहउचे फॉर्मली जोड़ा रजिस्टर्ड इंडस्ट्री गुड़ा अच्छी बेसिक इकोनॉमी सेक्टर क्लासिफिकेशन में जाऊन छोड़ा हाँ ना नहीं नॉर्मली सेक्टर्स कहले केतरा अछि प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी आउटा कोन क्वार्टेनरी जोटा कहउचे क्वार्टेनरी हाँ ना नहीं प्राइमरी आउटा कोन सेकेंडरी दुई लिखि देले एतन छाड़ा हो सेकेंडरी आउटा टेरिटरी टेरिटरी गोटे गला आउटा कोन क्वार्टेनरी गोटा अछि यहाँ कौन जाऊँगी एक्टिविटी नेचुरल जो एक्सट्रैक्शन हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर जोटा कहूँ नेचुरल प्रोडक्ट जोटा कहूँ ऑर्गेनिक भी कहि परिबो एला मैन्युफैक्चरिंग बा प्रोसेस देन टेरिटरी कहि सर्विसेज एजुकेशन भी अंडर जाउची बैंकिंग फैंगी एटसेट्रा क्वार्टरली कहले नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस जोटा कहूँ हाँ नहीं हाँ नहीं पिले मीडिया कहि परिबो परफेक्ट
Manufacturing bricks from soil and weaving cloth from cotton fiber are examples of which sector's activity? Just टिके पूर्व कही मैन्युफैक्चरिंग जहारा भूल हम गाड़ी गोटे तले पड़े समस्त ऑडियो क्लियर आछे समस्त आंसर दे दियो हाउ समस्त आंसर दे दलो सेकंड इज द परफेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जाओ why is the territory sector also commonly referred to as the service sector जस्ट टिके पूर्व तुम कहते ना नहीं ना नहीं मत आंसर दे दियो मोर किछ कहबार नहीं परफेक्ट कौन कौन है आंसर these are its activities generate intangible service rather than physical goods है ना नहीं आओ से कौन कहला secondary sectors the activities in the territory sector do not produce a physical good on their own है नहीं under the standard three sector classification of an economy which of the following falls under the territory sector जोटा का हम कहूचे कौन एटा कहूचे हमें क्वार्टरी भी कहि परिबो सेटा भी ता अंडर जाय हां नै information technology software and call centers IT software हां नै so information technology components like internet cafe software development and call centers and non physical knowledge based services classifying them explicitly inside the territory or service sector. Professor Oscar Lange coined which famous financial term to suggest that socialist economics should be adopt market mechanisms. एटा कहले कैपिटलिज्म में जानि ना नहीं एटा ठीक अछि टिके ओ कैपिटलिज्म जानछ हाउ द प्रॉब्लम ओके ओ कुछ माइग्रेन कोन प्रॉब्लम है देन मार्केट सोशलिज्म यार आंसर जोटा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जोटा आम कहूचे सीटा कौन जोटा आम कहूचे इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड मार्केट नुह जोटा आम हाँ नहीं जोटा कहूचे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन जोटा आम कहूचे कम्युनिस्ट पार्टी जोटा को आम कहूचे हाँ नहीं व्यवहार हुए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जोटा कम्युनिस्ट पार्टी देखा जाए ओके ठीक अच्छे देन आसला आ गोटे कौन ऑप्शन प्लान्ड कैपिटलिज्म जोटा कहूचे या एटा भी कौन कहूचे गोटे ओस्कार लेंज कर माने नुह कैपिटलिज्म जोटा कहूचे नॉर्मली सोशल ओनरशिप मार्केट प्राइसिंग को हो
एफिशिएंट रिसोर्सेस आलोकेशन हो ये जिनस सब कहाँ अंडर जाए ओस्कार लांचिंग अंडर जाए हाँ नहीं तांकर जो थियोरी थिला सोशलिज्म जोटा कहचे मार्केट सोशलिज्म ठीक अछि लेट पीपल लेट देम डू लेट पीपल काली कुहा हितला हाँ नहीं काली भी कुहा हिची बहुत भलो से हो as a country shifts structurally from a poor developing economy to a highly prosperous advanced one what general trend is observed एथरा तमने आंसर दियो फटाफट फटाफट आंसर देता Perfect. The share of agriculture declines while the service sector becomes dominant. A country shifts structurally from a poor developing economy to a highly prosperous advanced one. What general trend is observed? Share of agriculture share decline haba, kintu service sector become dominant. As a nation develops and becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture and the population working in it declines significantly, while the industrial and service sectors witness rapid expansion. Which of the following profiles shows a peculiar deviation in India's historical sector shift between 1950 and 1911? ठीक है हो स्पीड अप कर दवा चलो पीड़े स्पीड अप करिबा हाँ परफेक्ट रकम होची एग्रीकल्चर जीडीपी शेयर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली हाँ नहीं इन इंडिया 1950 1990 the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly but the population working in it etc. Under the standard production terminology, what are the macro factors of production? Manmohan Singh LPG, हाँ LPG reforms, perfect. Perfect. Land, labor, physical capital, and human capital. जोटा को मैं enterprises को है ना Every production is organized by combining four essential baseline factors जोटा land, labor, physical capital, and human capital जोटा करना होता है. What is an individual decision making unit such as a person, household, a bank, or a corporation जोटा को that initiate economic choices called dash. Perfect. Economic agent. Very good. By economic units or economic agents, we mean those individuals or institutions which take economic choices and decisions such as consumers deciding what to buy or bank setting interest credit rates. मैंने तुम लोन नवा गला तुम केते टका नवा चाहछ बैंक तादरे केते इंटरेस्ट लगे चाहछ सेमती ओके द सिस्टमैटिक assumption of ceteris paribus is frequently utilized in economic modeling. What does this term literally translate to? फटाफट आंसर दे दे समझते हैं जो सेट्रिस पारिबस मैंने कहले कोन गोटे लैटिन जोटा फ्रेज जोटा हम कहूचे जार मान हैला अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है ना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जोटा हम कहूचे है ना अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल अदर थिंग्स कोन रिमेनिंग कांस्टेंट जोटा हम कहूचे which sub-discipline of economics primarily investigates how prices and quantities of a single commodity are determined through individual interaction in a specific markets.
वेरी गुड माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना फाउंडर किए स्मिथ है ना ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ individual economic agents consumers producer and analyzes how the prices and quantity of a single commodity are determined in a specific market structure. In contrast to macroeconomics is principally concerned with measuring and evaluating which type of indicators. Adam Smith, perfect. Very good. Aggregate measures like the total national output employment and the general price level. Normative economic analysis is structurally differentiated from positive economics because it answers which type of baseline query. देखुची नहले क्वेश्चन मिक्स करी चेंज कर देबी नहले मत नहले हिस्ट्री आनिबा पड़बो काने इकोनॉमिक रे त माने टिके इंटरेस्ट लो देखौछ हिस्ट्री आनिबा पड़बो हां सी होवर बिले whether the resulting economic outcomes are desirable or not से कहछि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक why what should be तमनु कहि दिले नै ଗୋଟେ एग्जांपल देथिली सेरा मु इरेज कर दैछि हो बुझ तमनु नॉर्मेटिव आ ऑब्जेक्टिव रे कहि नथिली हना नै कहीं ना एथिरे कोन सब्जेक्टिव रुहे नॉर्मेटिव रे सब्जेक्टिव रुहे और तो जोटा थिला ऑब्जेक्टिव रुहे फॉर्मेटिव जोटा कोछ है ना whether the resulting economic outcomes are desirable or not उत्पन्न होइतिबा अर्थनैतिक सफलता गुडी को समाज में आदर्श बा ग्रहणीय कि नुहे सेटा डिसाइड करे बा आदर्शात्मक अर्थनैतिक विश्लेषण नै नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सकारात्मक जोटा हम पॉजिटिव नॉर्मेटिव तमनु दुईटा कहितली ना कहि नथिली ना उधर कहि देबी टिके क्विक रिवीजन ओटे करे दबा ना कोन कोछ क्वेश्चन 1 ना 2 रे थिला सेटा तमनु कहितली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव कहिनी ठक सब एगना तमनु कहि नथिली एगना कहउछ पॉजिटिव नॉर्मेटिव तमनु कहितली पॉज नॉर्म what is कहितली what is what should be ओके फैक्ट बेस्ड कहितली ना कहि नथिली आ कोन वैल्यू बेस्ड ठीक अछि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहितला नै ठीक अछि एटा टेस्टेबल एटा डायरेक्टली टेस्टेबल नो नॉट टेस्टेबल नॉट डायरेक्टली टेस्टेबल ठीक अछि कहितली ना कहि नथिली ना कहि भलो होइछ किछ असुविधा नै ठक सब चालची वाला नो 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 which of the following is evaluated as a standard example of public good that cannot be optimally provided through free market mechanism transactions okay
बुझो क्वेश्चन बुझो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is evaluated as a standard example of public good कहिछि that cannot be optimally provided through free market through provide करा जाय परिबो नाही cannot be free market through provide कर mechanism transaction through भी free market mechanism transaction through ru provide करा जाय परिबो नाही बुझो ना बी हम कहीं नेशनल डिफेन्स एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो जातीय प्रतिरक्षा एवं सरकारी प्रशासन जो आम कहे पब्लिक गुड कहले दीटा क्यारेक्टरिस्टिक्स आम बुझीपर कहीं भूल है कह भाई जोटा आम कहीपर दीटा क्यारेक्टरिस्टिक्स पब्लिक गुड कहले जोटा नॉन राइवलरी आउटा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी ठीक अच्छे नॉन राइवलरी कहले कौन कहे जिते गोटे पर्सन माने गोटे पर्सन यूज हेले जोटा अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स को रिड्यूस करिवो नाही सेटा कहि पाबा हमें नॉन राइवलरी माने गोटे पर्सन जते वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स जोटा हमें कहि परिबा ठीक अच्छे देन आसिला नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी जोटा कहै नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी जोटा एक्सक्यूल विरक्ति लगे एटा वर्ड क्रिटिकल इंग्लिश गुड़ा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी ठीक है एक्सक्लूड रु एक्सक्लूड छाड़ा एक्सक्लूडेबिलिटी ओके जोटी कौन पीपल कैन नॉट इजीली बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग इट इवन इफ दे डू नॉट पे certain public goods like national defense public parks and internal administration cannot be allocated through standard individual buyer or seller market जोटा कहउछ हमें ऑक्शन हुएनी किछि पार्क्स गुडा को गवर्नमेंटल पार्क्स हो सोडा कोन ऑक्शन हुएनी तार ठीक अछि the baseline problem of free rider is an economic system explicitly emerges due to which structural feature of public goods public example माने गोटे public good रो simple example national defense street lighting जोटा कहउछे लॉ एंड ऑर्डर कहि परिबा पब्लिक पार्क्स जोटा कमे कहि पार जोटी समस्त आला जोटा को जण को कहा को ऑक्शन करा जाई परिबनी कहा को सेल करा जाई परिबनी पब्लिक गुड कहले नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल जोटा कमे कहउछे नेशनल डिफेंस हला बेस्ट एग्जांपल परफेक्ट हाउ समझ आंसर दे देला सी इज द परफेक्ट आंसर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी जस्ट टिके वर्तमान को कहते नहीं अरे जस्ट तमनु कहली परा द बेसलाइन प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एक्सप्लिसिटली इमर्ज ड्यू टू व्हिच स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स आउटी पब्लिक गुड्स रो कोड एग्जांपल अछि नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आउटा कोन कहितली आउटा कोन कहितली इखना तमनु कहली तमन सब बुझी होला नॉन राइवल कहनथली न कहल नहीं आ कोन करिया हो when a singular country behaves entirely as a closed economy it implies that the nation dash completely operates under automated digital banking keys has no macroeconomic interaction of foreign trade with the outside world siphons of all taxes revenues into private corporate entities allocates resources excessively to consumer durables manufacturing प्रणाम प्रियमता प्रणाम समाधान से दे दियो perfect has no macroeconomic interaction for foreign trade with outside world है ना नहीं
A closed economy refers to an economic framework having zero foreign trade relations, no exports or imports, such as system depend exclusively on their internal domestic resources and have no outside interaction. In accordance with the text analysis, what distinguishes a peasant family production unit from a capitalist farm entity? आंचलिक विश्लेषण अनुଯାयୀ एक कृषक परिवार पीजेंट फैमिली जोटा कहे उत्पादन एकक एवं एक पुंजीवादी प्रतिष्ठान जोटा आम कहे कैपिटलिस्ट फार्म मध्य गठनमूलक पार्थक्य कौन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम कैपिटलिस्ट फार्म्स रिलाय heavily on hiring wage labor from the market for profit maximizing कौन जोटा प्रॉफिट जोटा कम थियोरी देखो थियोरी कहला बेल को कहीं थियोरी यही तो नॉर्मल ओएमआर क्लास रे की देखा ना थियोरी क्लास कौन बुझे हो कैपिटलिस्ट फार्म ऑपरेट्स एक्सप्लिसिटली ऑन हायरिंग वेज लेबर from the asset market using physical input to produce goods exclusively for sale to earn profits है ना नहीं peasant family units कहले labor is performed primarily by family members and output is mostly self consumed है ना नहीं जो धान अमल है बा चाष रु लाभ है ताकू से निजे खाइले निजे यूटिलाइज कले निज फैमिली मेंबर्स जाकि चाष कले क्या मजुरिया एबे तो मजुरिया पकेले आउ द मैक्रो इंडिकेटर्स कंप्राइजिंग द परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ऑफ BFSI structurally cover which industrial umbrella BFSI कहले कौन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस हाँ नहीं परफेक्ट वेरी गुड BFSI हाँ नहीं is an explicit industry umbrella term summarizing corporate entities that deliver a continuous range of economic products, service in banking, financial service and insurance. एटी देखो एटी गोटे माने मिसिंग अछि ताको जस्ट टिके जदी रिलोड कर दबो यस पड़ास आसे क्वेश्चन 30 ACD ऑप्शन नहीं कहीं के नहीं सी आसुची ऑप्शन किंतु कम आसुची एतरटा हो देखुची देखु जदी राती को पॉसिबल हो हिस्ट्री कर देबी हिस्ट्री एमआर कर देबी देखिबी आ एसिडी पाप कर एसिडी बा एसिडी एसिड ACD एसिड एसिड कहले जोटा अम्ल हानिकारक हाँ क्वेश्चन 30 समझते आंसर दे दो पहले 30 में अच्छे under the law of variable proportions what specific transaction path does the marginal product MP curve display as input employment expands it remains accidentally constant throughout no संपूर्ण भाव सर्वदा स्थिर रहे नो कहना से कौन कही वेरिएबल प्रोपोर्शंस हाँ नहीं it initially reaches a maximum point and subsequently begin to fall it descends infinitely to a perfect linear zero margin no margin अच्छी it mimics a rectangular hyperbola curve structure no हाँ राति राति क्लास में देखुच तम अवस्था कौन हो हाँ ACD भी जदि न छोड़े तो मन कर ताहले कहब
हिस्ट्री क्लास आज आनी किसी टाइम जिते लागू आज हिस्ट्री क्लास आनी which criteria explicitly isolate whether a specific production timeline environment is functionally a short run or a long run. Whether all factors of production can be varied or at least one factor remains fixed. It is short run or long run. Rather than calendar time limits, the distinction is operational. In this short run, at least one factor input is fixed and cannot be changed, while in the long run layout, all factors of production can be altered simultaneously. At which explicit geometric point does the short run marginal product MP curve intersect the average product by P curve? PR भाई कुंडल भाई का फील्डिंग सेट कर देवे सर आम से आसो ठीक अच्छे निश्चिंत हिस्ट्री क्लास हम तुम मैंने आसो ठक तुम मैंने छा आसो हाँ at the maximum point of average product AP curve बाहर geometrically as long as marginal product MP exceeds average product AP to talk about AP continues to rise. When MP falls AP on way MP falls below AP starts decline, hence the MP curve cuts the AP curve from above precisely at the maximum. मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ना कौन हिस्ट्री बा तमने आसीबनी इम्पॉसिबल ने मु एबे क्वेश्चन बनै देबी एबे क्वेश्चन बनै रखि देबी राति की तमन को हैरान करिवि अछि if an enterprise doubles all its factor inputs simultaneously and experiences a resulting output expansion that is exactly double the production function satisfies as increasing returns to scale no, constant returns to scales perfect, decreasing returns to scale no, diminishing marginal utility no. आखि बंद करी भी ये उड़ो जो मजाक उड़ो जो तमाने और ना राति क्लास को देखो Engel's law establishes an explicit expenditure tracking relationship according to this socio-economic rule as a family's income increases. हाँ स्पीड अप कर दो तुम सब आंसर जानी छो मु स्पीड अप कर दो ठीक है the percentage of its total income spent on food items decreases. Founded by 19th century German statistician. Okay, Ernest Engel's law establishes that as the working family's net income increases, the budget percentage siphoned into food purchased continuously decreases, even if absolute spending on food increases. In a perfectly competition commodity, the market structure how is an individual manufacturing firm optimally categorized regarding price control. ऑप्शन चेंज कर देबे अरे माने इकोनॉमिक जतले बनौतली मु बहुत तरबरे थली माने मु जतले तरबरे थाए मोर मन रहनी मु बी ही ऑप्शन बनाएसो of price taker for a standard price taking firm operating in a perfect competition what is the graphical orientation
of its average revenue by a marginal revenue curves identically equal to each other and form a horizontal line matching the market price. आ तुमको आंसर कहिया देले सिना तुमने ठगिबो हो. Under the condition of a perfectly competitive market structure, a firm's profit maximizing positive output selection requires that dash. Market price is strictly less than average variable cost. Now market prices equals marginal cost and MC curve is non-decreasing. Perfect. How? What is the precise structural definition of the short run shut down point for a competitive manufacturing firm? Because the peak interaction point of the long run asset supply curve no दीर्घकालीन संपद जोगाण वक्र रेखार सर्वोच्च छेद बिंदु नुहे. The total revenue matches compiled corporate tax liabilities no. The baseline intersection location of biometallic currency note indices. Question number 38 में अच्छे. हाउ सेमती सारी दो रिवीजन कर दी गाना तुम जानी सारे बी पैटर्न. हाउ बहुत जल्दी तुम गोटे धोखा मिले क्वेश्चन व्यवस्था नहीं. हाउ व्हेन द मार्केट स्ट्रक्चर अलाउज फॉर कंप्लीट फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आइडेंटिकल फर्म्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस विल invariably settle at dash. Maximum ceiling limit fixed at by central planning boards. How best नहीं. The point exactly equal to the minimum average cost of the firms. How बहुत जल्दी धोखा मिले तुम क्वेश्चन व्यवस्था नहीं. What baseline macroeconomic outcomes occurs when the government establishes a mandatory price ceiling below the market determined equilibrium price? A chronic situation of exceeds demand or product shortage. Okay, how? एबे देखुची मोर आंसर देखुची एबे मु आंसर देखि कहार कते ठीक अछि. When the government establishes a mandatory price floor recommends such a minimum wage legislation strictly above the market determined equilibrium price, what systematic outcome arises? देखिए आंसर देखिए कहार कते ठीक अछि. कहो a chronic situation of excess supply or product surplus. ठीक है. How पहुंची वाला तो मन से नहीं. How a price floor imposed strictly above the equilibrium price results in the market demand failing to QF while farm suppliers wish to supply QF. This misalignment inherently creates a state of excess supply of markets. In non-competitive markets, simple monopoly in the commodity market is structurally defined by which set of conditions? Single seller, no close substitute and intentional entry barriers. Perfect. How ठीक है. Which of the following equations accurately reflects that unique structural identity of the average revenue curve for a monopoly firm? धरिगले नहीं हम माने पैटर्न धरिदेले नहीं मो क्वेश्चन पैटर्न. हाउ चालाक मार्केट डिमांड कर्व पी भ्रमरटा. How? Under a negatively sloping linear market demand curving facing a monopolist, the marginal revenue MR curve displays which structural behavior? It runs in identically horizontally matching the vertical cost index. No.
It lies exactly below the average revenue. Perfect. How? When the price elasticity of demand facing a monopolist it's mathematically equal to unity. The corresponding value of marginal value is dash. Exact 0. हाँ ना हाँ व्यस्त नहीं धोका मिलियो बास धोका आसिला अरे क्वेश्चन रही छ structural economic definition of stagnation describes the anomalous macroeconomic condition that simultaneously combines dash. The answer there so there's a plus 2 economic research. No syllabus ro अछि पूरा आंसर दे दर पहिले हाउ हाउ ठीक अछि severe economic stagnation or high unemployment with soaring inflation ठीक अछि what type of market structure is explicitly characterized by large number of sellers delivering a differentiation non-homogeneous brands with free entry and exit parameters economic boring subject wa सेते मो क्लास आनिबा को भी माने विरक्ति लागे monopolist competition perfect how the special case of an oligopoly market structure where exact two commercial sellers control the total market supply is defined as a dash cattle monopoly duopoly bilateral systematic open market imperative core sector किछि पार्ट छाडी देले जोटा हम कोजे डिमांड एंड सप्लाई कहि परिबो आ कोटा जोटा कहि परिबो ए कर्व फॉर बेडा सब भारी विरक्ति लागो मते पढिया पडुछ तमान पढिया कहले मते भारी विरक्ति लागुछ हो हो सांस जरा तो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़िया एम्प्लॉयमेंट हो सबू रेशियोस ठीक भल लगे why do economists state that the individual demand curve facing an oligopoly farm tends to display structural price rigidity king demand curve छोटा काम कोच हो से कहला से कहला competitors follow price cuts ignore price increases जोटा हम कहूचे the government reaches the maximum retail price line consumers exclusively rely on direct barter exchange tracking logs ये पिला बुझी जो पैटर्न सब तो माने द दो भगवान competitors follow price cuts but ignore price increases under the definition compiled by the next analysis what distinguishes normal profit from supernormal profit a normal profit applies exclusively to biometallic currency system स्वाभाविक लाभ केवल ही द्विधातव मुद्रा व्यवस्था रे प्रयोज्य हुए normal profit is just enough to cover both explicit and implicit opportunity cost yielding a zero net economic profit how राति क्लास रे हिस्ट्री पकाउछि हार्ड क्वेश्चन तक प्राय 6th ठारू 12th जाके सब हिस्ट्री उड़े देबी तमान ऊपर सिलेबस अनुसार मुंडो ऊपर जीवन ठीक अछि अगेन थैंक यू ऑल थैंक यू समस्त को देखुछि जदी हबो मु 3टा बेले नै जाई पारे क्लास मु देखुछि क्वेश्चन जदी बनि गला गोटाय भितरे दीटा भितरे ताले मु 3टा बेले तमान जणाई देबी हाँ हिस्ट्री तमाने प्रो जे हेले हिस्ट्री ऑनर्स पिला पॉलिटिकल ऑनर्स पिला तमान सब आज हिस्ट्री रे तमान हरण करिमु ऑप्शंस हो
तुम दी जन हिस्ट्री पॉलिटिकल ऑनर्स पिला ना तुम दी जन को हरान करी बस ना हो ओके ठीक अच्छे साइबर सेशन एगेन समस्त बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल चलची सब पढ़ापढ़ी चलची तो ନାଇଁ ନାଇଁ ହାର୍ଡ क्वेश्चन ହିଁ ଦବା ନା ହାର୍ଡ क्वेश्चन ଦବା ନା ଭାଇ ୟୁନିଟ 1 ବେସିକ ରୁ ଆସିବ ନା ବେସିକ ରୁ ଆସିଲେ ହାର୍ଡ ଏତେ ଆସିବନି ନର୍ମାଲ ଆସିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଟପିକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଚାଲାକ ପଡ଼ିଗଲା ତମମାନେ ହଉ ଏଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ମୁଁ କେୟାରଫୁଲ କସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ଯେମିତି ତମମାନେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ମୋତେ ଡବଲ କ୍ରସ୍ ନ କରିବ एगेन थैंक यू और साइबर सेशन बंद उत्तर जय जगन्नाथ।